Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Okay. Okay. Good evening, everyone. I think now it's 6:05, so we should start now. So once again, good evening, everyone. On the behalf of ResearchWise, this is Pankaj Patel. I warmly welcome you all for today's workshop on AI-powered reference management tool. And we are truly delighted to see such a diverse audience. I mean, we got 1,000+ application for this workshop, and we were wondering that how we will accommodate everyone given the limited capacity of Google Workspace. But thank you so much for your overwhelming response. And we got registration from student, from research scholar to faculty members and professional across different discipline. So what makes today's gathering even more special is that despite it being Sunday, weekend people go outside and do their own work. Uh, and it's also Durga Puja festival is going on, and so many things is around today. Even though so many participants have joined us here in Google Meet and also on YouTube Live, so thank you so much. And this shows the growing importance of digital and AI powered tool in shaping the future of research. Uh, Once again, I welcome you everybody. And as we know that AI has taken over everything now, even people do not Google and they go and ask AI because it's provide more interactive and customized answer you want. So why not using AI in our research? So in today's world of information, when information is so much everywhere and it's overloaded, the ability to manage references efficiently is not just an academic requirement but an essential skill for every researcher. With AI-enabled tools, reference management has become more smarter, faster, and it has become more easier also, better integrated into the research process. This workshop is designed to introduce you to such tools and provide hands-on insight that, you can apply in your academic and professional work. So thank you so much, everyone, and we are very grateful to you, to everyone, those who have joined us today. So before we move to the technical session, it is my privilege, and we are very much honored to have Professor Saidunisa with us. And I would like to invite ma'am for her opening remark. And let me introduce first Professor Nisa to all of you, those who are new to her. And Professor, Dr. Unisa is a former professor of biostatistics and epidemiology at the International Institute for Population Sciences, Mumbai. And she has more than 30 years of experience in teaching and research. She has led major studies on nutrition, maternal health, infertility, and she has worked with many government body, national and international agencies such as UNICEF, WHO, World Bank, and she did her PhD from IIPS Mumbai. She got training from London School of Hygiene, and she herself has trained and supervised, if I say, more than 20 PhD scholars. Ma'am has published more than 100 scholarly articles and more than 5 books, many book chapters. And she is also fellow of the Royal Statistics Society, an active member of International Union for the Scientific Study of Population, IUSP. Currently, she is a president of IAPS Alumni Association. And we are very grateful, ma'am, to have you today for this workshop, and we are truly honored. And now, ma'am, we now invite you to share your word of wisdom and deliver the opening remark for this workshop. Over to you, ma'am. Uh, Thank you, Pankaj, for such a warm welcome to the participant as well as my introduction. And I also like to welcome all of you. And I am also very happy that research-wise have started this type of workshop, which are very useful for the people in this era. Basically, if you look at why we need publication, there are 3-4 things why we need publication. At the first level,
when you talk about individual level, nowadays for PhD programs, publication are required. For a job, you require publication, as well as for promotions and all other things you require publication. The second one is for policies, programs. If you publish the things, then only government or government officials can take those things and use it for policies and programs. The third one is, as a researcher, it is our duty to share our knowledge. Whatever we have produced, that has to be shared by the community as well as other researchers. And the fourth one is it will avoid duplication, because many times it happens that you are sitting here in city A and B, in city B also the people are publishing it, the same type of thing. See, if your publication is available on different platforms, people will be aware that already this type of work is done, so we need to do something new. In the past, it was very difficult to carry out research. People were used to take around 2 to 3 years, because they have to visit different universities, college, different libraries, central libraries or state libraries, college libraries, university libraries. And sometimes it used to be only for one discipline that type of books are available. It was not multidisciplinary approach in the past. And now we are emphasizing multidisciplinary approach. So we need to have larger database, publications, and all those things. To capture all those, now databases are also available. And some of them are free of cost, some are you have to buy, or maybe universities buy it and you can access it. But apart from that, writing references was very complex, difficult, and people used to write in different styles. Publishers will not accept those things. So now with this AI management tools, as well as reference styles available in packages, you will not have to worry or waste your time only in writing. In thesis also, many people have taken 2 to 3 months to finalize their references in such a order that it is acceptable. In publication also, you have to have lot of references, then only some of the journals will accept. If you do give references only 4, 5, 6, they feel it is not sufficient for publication of paper. But on the other hand, what I wanted to tell you is that although these facilities are available, but you need to be very ethical how you are using it, and do impactful research, and coordinate with other people. Use this as well as practice it. So, but keep in mind, AI is available, but you should not use in unethical manner. It has to have an ethical this thing. So all the trainings, all the workshop will keep in mind that, teach them ethical guidelines also, how to use it. And with this, I wish all the best for this workshop. I am hopeful that with these two young fellows from Research Wise are going to teach you very well, and you will learn many more things. All the best for all of you. Thank you, Pankaj and Amit, for inviting me. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah, definitely, ma'am. When it comes to AI, that we have to be very careful, and also we have to follow the ethics when we are taking help of AI. So in reference management, this workshop, we are going to teach same, ma'am, that how tools are there, different tools are there, but that tools how we can easily use that with the help of AI. So to cut that long journey, as you explained that earlier, people used to go to library, searching books, and then currently everything is available on the internet, even research paper and many old books are scanned copy you can find on digital library, digital repository are there, so many things. Even every thesis one can get from Sodh Ganga. But still, ma'am, definitely we have to be very careful. We have to move ahead in the field of research using AI and all, with all ethical practices, and we have to be very cautious. Thank you so much, ma'am, for your time, for this insightful talk, and definitely next 2 hours is going to be very enriching for our participant. Thank you so much, ma'am. Welcome. So Welcome. let me move ahead, and yes, ma'am. Thank you, ma'am. So It's not like that.
Okay, further any delay, let me call upon today's expert who is going to teach all of us to about use of AI in the reference management tool, not just use of AI, but how we can do referencing in a right manner for with the help of different reference management tool. So we know that still many of us do referencing on the Word, Microsoft Word, but there are so many tools that can make this task very easy and very systematically, and the format we want it can be get from there instead of doing the manual task. So without further delay, let me invite Amit Kumar Goyal, who is a PhD scholar at IAPS. He himself has published so many good paper in the international peer-reviewed journals. He is about to complete his PhD, and he is expert in the demography, and he has worked in the field of aging. Uh, he Amit is the right person to teach this all because he has already delivered talks on use of AI in reference management tool. So without further delay, Amit, over to you. And I hope this coming next 2 hours is going to be very enriching for our participant. Thank you so much. Over to you, Amit. Thank you, Pankaj. So if you can confirm if I'm audible, is my voice clear? Yeah, you are very much audible. Your voice is audible, and screen is also visible. So thank you. So just shared is my screen visible? You can confirm. I guess. Please share your screen. I think currently only we can see you, not your screen. So Pankaj, thank you for Yeah, now we can see your screen, Amit. So before diving deep, before diving deep, we have like around 93 or 94 participants with us. So this workshop we designed in collaboration with Cite AI, which is itself a different platform, uh, which provides AI-based solution for our reference management tools. But before diving deeper, let me set some rules on the floor. So for better efficiency and better understanding of this whole workshop program. Okay, so the medium of this workshop will be English. That means I will be using English as well as Hindi. So don't worry about that. And second thing, it should be like I'm planning. It should be like very interactive, so that I can get as much as feedback, as much as interaction from you guys. So it will be beneficial for both of us, like the participants as well as for me. If like, am I able to give you something out of my skill set? So let's begin. So diving deeper, before diving deeper, there are some concepts we usually see in our reference management, like what is footnote, what is endnote, what is references. We all have heard these terms regarding references. But before that, let me ask some of you if you guys have like, if you want to say something about what references are, why do we need some reference tools, and which tools do you usually use for your management of references or literature? So if any of you wanted to contribute here, like out of those 91 participants, कोई अपने वो रखना चाहता है, what is reference? What do we references? What do you mean by references? Basically, when we use someone else's work for our research, we give their citation. Yes, very correct. So So, this, yeah, it's like giving credit on which we are producing our own research. So it's a very ethical practice which we always should consider while we are writing any literature review. Correct. So have you heard of these terms like which I have just shared? Okay. The footnote, endnote, references, and bibliography. These are the most common terms which we get in terms of reference management. Okay. So
basically to give an idea of what footnote, as the name suggests, foot, that means that comes on the foot of a page specifically. EndNote, that means comes after the end of chapter or any document which we create. For references, it gives us a more specific kind of thing, like end of documents. Like for example, if I'm writing a thesis altogether, so after completion of all my chapter, I'm putting references. If I am putting references after each chapter, that is EndNote. And if I am putting footnote, like if I am putting references as per se, footnote in each pages, that is footnote. Okay, am I clear? Are you able to get the differentiation between these terms? Footnote, EndNote, references. Am I clear here? Till here? तीन चीजें होती है, footnote, EndNote, references. Footnote होता है जब हम एक पेज में के लास्ट में कुछ references which we have cited, अगर हम वो डाल रहे, that is footnote. For suppose like in my thesis I am writing each page, तो मैं डाल रहा हूँ footnote एक पेज के बाद, हर पेज के नीचे में कुछ citations होंगे. EndNote क्या होता है? अगर मैं वही चीज each chapter के बाद डालूं, that is EndNote. सेम चीज अगर मैं पूरी थेसिस के लास्ट पेजेस में डाल रहा है कि 200 पेजेस आर देयर, लास्ट 5 या 10 पेजेस में अगर डाल रहा हूँ, दैट इज रेफरेंसेस. बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी इज inclusion of all the things which inspired me to get literature, to find it, to conceptualize my research. So apart from references and EndNote, footnote, if we like, there is a book I read, but I'm not citing it in text, but I'm using to conceptualize my research. So if we include those things in our list, that is called bibliography, which you can also see here, like scope, immediate reference, deferred reference, narrow, cited only, and broad, all consulted, even consulted. So this gives us whole idea like what these different terms refer to in our research. Okay, am I clear till here? Yes, sir. Let's see some examples. I'm setting these before diving deep into technical part, so that you can have better understanding. Okay. Yes. Vishal Pandey asked, can you place bibliography? Yes, you can place bibliography. Bibliography is usually placed at the end of the thesis only, end of our document only. So you can use there. Footnote, as I just said, for each footnote references at the end of the page. Okay. EndNote, what is EndNote? So after each chapter, what we give the list of references we use, that is called EndNote. Okay. Reference list after completion of my whole document, but only citing those which we have used in text citation, which are not including those who inspired, which literatures have inspired my research. So that is called reference list. And how it is different from bibliography? In bibliography, we use our inspiration literature also, which helps us to construct our research. Okay, so that's the major difference. Okay, here we include like book articles, films, journal articles also, which we usually don't cite in our in-text citation, which we will come later on in our workshop. Okay, clear so far? So during the registration process, we ask a question in our registration form, like which reference management tools are you currently using or familiar with? So as you can see here that almost like 3 out of 4 have responded they are still using Word, and few have responded like 1/3 also used mainly Zotero and EndNote. So it's a like diverse participants we have here, but as we all know that using MS Word in our literature gives us very temporary things. Like it can give us a very short-sighted. But when we do a large number of researches, which we consult lot of literatures, it has its own limitation, which we are going to discuss right now. So स्ट्रक्चर होने वाला इस लेक्चर का क्या कि हमने प्लान किया है कि पहले हम क्या करेंगे, 2 टूल्स देखेंगे लिटरेचर रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए जो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं,
that is going to be एक free होगा, that is Zotero. दूसरा एक होगा paid होगा, that is EndNote. And after overviewing these tools, how it helps to cite our literature, then we will move to AI part. What are the major tools of AI? Again, we will see one free tool and one paid tool. Paid, we can say for now, as we are organizing this workshop in collaboration with Cite. So Cite have provided some codes which you can redeem to get 1 month free subscription of that portal. But yes, that will be based on your interaction with us in workshop. I will ask many questions from you guys. So if you contribute, if you interact very much, so we will be very glad to share those codes with you so that you can practice more on your own. And then after that AI part, we will move to like full-fledged conceptualization in combining these two like traditional tools, which I said, that is Zotero and EndNote, and with AI tools, how we combine those things to get more inclusive idea, how to utilize optimum level of reference management. Okay, does this sound cool? Are you guys excited? Give me some thumbs up. If you guys are excited, give me some thumbs up. Okay, seeing lots of thumbs up. So we have shared 2 links to you guys, like EndNote and Zotero. So how many guys have downloaded those tools? That is proper setup. Have you installed EndNote or Zotero on your system? Okay, if you have not, so I will again request you guys to install Zotero. Zotero is free, so you can install anyhow. And EndNote, if you prefer, you can install, or I will show on my platform, on my system. You can install it later also. So for Zotero, let me share my screen again. Again, if you guys have any question in between, you can either unmute yourself, or it would be better if you can put in chat also, because I won't be able to see chat on regular basis. So okay. So if you type zotero.org in your system, some of you not downloaded, so that's why I'm showing it here. Just click on download. It is free, so it will get installed on your system after downloading it. Plus, it will also give you some like Zotero connector. Second thing with Zotero is Zotero connector. I want you guys to download this also. Here, if you type Zotero connector, अगर आप Zotero connector गूगल में लिखते हैं तो आपको फर्स्ट फाइल मिलेगी, दैट इज Zotero connector. सो हियर यहाँ से आप दोनों चीज डाउनलोड कर सकते हैं. तो Zotero का जो एप्लीकेशन होगा, दूसरा जो क्रोम एक्सटेंशन होगा. So have you guys downloaded both? Give me some thumbs up. Okay. If someone have not installed it yet, let me know if someone have not installed it yet. I think great. But before that, out of these, like how many participants do we have? Like 94. How many of you have ever used Zotero? Or if someone have new, give me thumbs up. Those who are new to Zotero, have never used, have only used Word. Okay, great. We have many. Okay, great. I think I'm audible. Is my sound clear to all of you guys? Yes, it's very much clear, Amit. Go ahead. Okay, great. So if you have installed Zotero, so just write Zotero in your search engine. You can find this app here. Just click and open it for now. So you will get this screen, not this screen. It will be empty here, and some message will be come up here. So don't worry about that.
just create a library. You will see my library over here on your screen. So what we do, we make library. That means here we will store all the citations which we have collected during our literature review, or we found like this paper, this specific book chapter is necessary for that I want to refer in my research. So I have made few folders. You can just click on my library, click on new collection. I'm making new collection. Let's type workshop reference, demo purpose only. I'm making a new collection named workshop reference. You can make the same library or as per your own convenience on your own system. So I want you all to follow me up till here. Are you able to make new collection on your system? Great. So if you make this new folder, it will appear here, workshop reference. Okay, since we are conducting this workshop on reference management, so I give it some name. Now what we want to do, we want to populate some literature here. Only then we will able to use that in our Word or any text editor document. Okay. So what we can do, we have two ways. First, not the best way, but first you will be seeing this plus icon here, document plus. So either you add it manually, just click on what is, if it is an article, so you will click journal article. So pop-up will appear here and you can write manually like as we do in MS Word. So it will take very much effort to make one single reference. So I won't recommend it. It's of no use to us. Otherwise we will simply go into that Word only and use the same method. So we will able to find that thing there also. But we are skipping this thing. So what we can do, just go to our Google. If you have installed what we just called the Zotero connector. Okay. Have you all guys have installed Zotero connector? आपने Zotero connector में install कर लिया आपके सिस्टम में? अगर आपने कर लिया है तो आपको यहाँ पे एक Z जैसा साइन आएगा, क्रोम में एक Z बन के आएगा. Are you guys able to see Z over here? अगर इंस्टॉल करने के बाद दिस वन Zotero कनेक्टर इंस्टॉल करने के बाद अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो लेट मी नो राइट नाउ. Zotero connector, Purnam Roy, I guess. So someone have raised their hand. Prakhar Shukla. Do you have any question in mind? Prakhar Shukla. Yeah. तो सबके पास ये Z appear हो रहा है, correct? Because it's very necessary to be here to connect this thing with our in desktop application. Sir, I can't see that Z symbol that you are talking about. Okay, so are you getting this thing here? Puzzle type icon? Which is Yes, yes. Just Yes. click on extension. Yeah. Click on extension. You will find a list here. Many lists. So here you will find that Zotero Okay. connector. Are you getting this? Yes. So you can pin this. All right. अभी ये unpin होगा, so that's why it's not appearing over here. अगर आप Yeah, इसे yeah, pin thank कर you. दोगे, then it will. It is showing now. Great. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके. फिर हम क्या करेंगे कि हम किसी भी आर्टिकल लाइक कैन यू गाइस सजेस्ट मी सम आर्टिकल टू वर्क ऑन. लाइक अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ लिटरेचर, तो माइक्रोसॉफ्ट पे भी आई गेस माइक्रोसॉफ्ट पे भी वो प्लगइन आता है, एक्सटेंशन आता है, देन वी कैन यूज दैट आल्सो. बट आई वुड रिकमेंड सिंस इट इज मेड फॉर क्रोम, so I would recommend to use it on Chrome also.
Okay, debt management. I'm getting some topic on debt management. Let's give it time. Debt management article or research. We simply put this thing. So few articles will appear. Few research articles will appear. Let's go. Suppose this is journal for neonatal surgery, effectiveness of debt management, something. So we go to some article which we want to include our literature. Just click over here, any article. आप अपने इंटरेस्ट एरिया, आपके जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, आप वहाँ जाएं. आप जैसे ही ये करेंगे, अपने आर्टिकल पे जाएं स्पेसिफिक एंड लेट इट लोड. अगर ये लोड होता है तो क्या होगा, एक चीज, एक पहले ये क्या हो रहा था, यहाँ जेड अपीयर हो रहा था, राइट. अब देखना वो जेड चेंज हो जाएगा. एक डॉक्यूमेंट आइकन में जस्ट कीप ट्रैकिंग. ये आपको ये आइकन आपको दिख रहा है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में ये चेंज हो गया. पहले क्या था, जेड बना रहा था, बट ये क्या कर रहा है, ये हमारे आर्टिकल को रीड कर लेगा. ठीक है, और यहाँ ये जेड आ रहा है, मतलब जेड हट के एक डॉक्यूमेंट आइकन आ रहा है. तो हम इसे क्लिक करते हैं तो इट इज आस्किंग वेयर इट इज सेविंग. तो इट इज ऑलरेडी सेविंग टू वर्कशॉप रेफरेंस विच वी जस्ट क्रिएटेड. तो ये क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन से और हमारे वेब जो एक्सटेंशन है, और हमारे ऑटोमेटिकली उसमें वो डॉक्यूमेंट फिट कर देता है. अब हम इसे कंफर्म कैसे करेंगे, जस्ट गो बैक टू योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड यू विल फाइंड द सेम आर्टिकल. आर यू गेटिंग दिस? पहले यहाँ क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन नाउ वी हैव दिस आर्टिकल. सिमिलरली वे में क्या करेंगे, हमारे पास सपोज 10-15 आर्टिकल हो जाएंगे ऐसे. Let's do another article. Let's add another article over here. So can you guys Sir, give me? sorry to disturb you. I tried what you said. I opened an article and tried to save it, but it's giving me a message of the Zotero connector was unable to communicate with the Zotero desktop applications. So should the application be also open? Yes, Okay. correct. So you should have opened Zotero desktop. Simultaneously, you have to click that over there, over that icon. Otherwise, it won't work. Akshata, are you getting it now? Yes, sir. Great. So, guys, can you give me another topic to get some literature on that? Okay, can you show it again? Okay, simply. That's what I'm doing right now. Just give me another topic. I will do the whole process again. मैं सारा process फिर से करूँगा. I just want a Amit, can I topic from- interrupt? Yes, sure. So, Amit, can you help me find a particular government related documents instead Okay. of a research article? Because I find it difficult when citing the references of Yes. government documents, especially, or any national data. So, can you please help me show like? Yes, sure. We will come to that. We will use AI for that purpose. Okay. So yeah, that will come after like half an hour. So I will go on that also. So you have to wait for a few minutes. Thank you. Thank you. So did I get any topic to now? Okay, liquor market, liquor. Okay, so what we did, we first just type that topic, whatever in our mind, we get some articles. I'm just taking randomly. Okay, so the first link I'm clicking. Okay.
So it automatically detects again, like now we see it shows that it's a web page. So we don't want a web page. We go to its like its origin. So for go to its origin, we will use DOI. So this is the article we want to cite in our work. Okay. Let it finish its loading. Okay, so just go to save to Zotero. It's ये फिर से highlight हो जा रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? Just save to Zotero. Again, it is saving to this thing. Identifying facilitator. Okay, so let's check again on our this. आ गया नहीं अब? Can you see this? Our second reference. Yes, sir. Great. अब हमें क्या करना, जब हमारे पास ऐसे बन जाए लाइक 10 और 20 एज मच एज वी वांट. अदरवाइज वर्ड में क्या होता है, ये हमें मैनुअल करना होता है. लाइक सारे इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ देख रहे हैं, आप पा रहे हैं, ये हमें मैनुअली करना होता इनपुट. ठीक है, दैट वी डोंट वांट. और साथ में क्या हो रहा है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इट्स ऑटोमेटिकली टेकिंग दैट पीडीएफ आल्सो. आप देख पा रहे हो, ये सारा आर्टिकल ही खुद ब खुद सेव कर रहा है जो इसे सोर्स पे मिल रहा है. Otherwise, we can find the full text from here also. तो ये हमारे बहुत चीजों को हम एज अ टेक्स्ट रीडर, लाइक जैसे हम अबाउट को यूज करते हैं ना, रीडर को, पीडीएफ रीडर, हम इसे यूज कर सकते हैं. हम यहाँ सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं कुछ भी, और ये हमारे लाइब्रेरी में फॉर एवर, जब तक हम इसे मैनुअली डिलीट नहीं करते, इट विल रिमेन हियर. बट इन वर्ड क्या होता है, वर्ड में क्या होता है, वी लूज ऑल द इंफॉर्मेशन. Yes, no need to download. Tushar Sinha का क्वेश्चन है. So no need to download this. This will automatically get downloaded and saved in your local storage. ये क्या हो रहा है ना, ये क्लाउड से नहीं आ रहा है, बस हमारे स्टेप्स कम हो जा रहे हैं. डाउनलोड ये हो रहा है, सेव आपके लोकल डायरेक्टरी में ही हो रहा है. बट ये हमें एक इंडिविजुअल आर्टिकल को डाउनलोड नहीं करना होगा यहाँ. So that's the part here. ठीक है. Sir, can you also tell us, like, if we want to access it through, say, ChatGPT, for example, I want ChatGPT to explain me that article. So, can we do that also? Yes, of course. Just click that link. ChatGPT में क्या है कि हमें बस बेसिक इंफॉर्मेशन देना होगा एनी फॉर्म में. जस्ट आप या तो ये लिंक ChatGPT में डाल दें एंड उसे कहें कि रीड दिस लिंक, वेब लिंक फॉर मी, और आप पीडीएफ डाउनलोड करके, इफ पीडीएफ इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गिव दैट टू ChatGPT. बट इससे क्या होगा कि हमारे रेफरेंस मैनेजमेंट में कोई असर नहीं आ रहा, कि हम एज ए रीडर वो कर रहे हैं, लाइक एफिशिएंसी होगी. लाइक हम पूरी आर्टिकल नहीं पढ़ना चाह रहे, बट हम चाह रहे हैं मेथोलॉजी आ जाए, इससे कुछ वेरिएबल्स हमें पता चल जाए. तो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज ChatGPT. बट ChatGPT का अलग यूज जो मेरे हिसाब से लाइक अभी तक आपने सोचा नहीं होगा, वो अभी हम कुछ देर में करेंगे. ठीक है. Okay, I'm just for now, I'm just giving idea how to use Zotero only. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं इसी से. अभी क्या है, जैसे हमारे पास ये 2 आर्टिकल आ गए. नाउ वी जस्ट डोंट वांट टू कीप आवर आर्टिकल्स हियर. हमें क्या करना है, हमें करना है इसे वर्ड में यूज, अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज. करेक्ट. उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ओपन योर वर्ड एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग यू विल फाइंड दैट Zotero इज ऑलरेडी कमिंग अप हियर on the top ribbon. Are you all finding it on your system? क्या आपके सिस्टम पे भी Zotero अपडेट हो रहा है? No, sir. Yes, sir. Please first open. Please first open Word file. हाँ, obviously ये वर्ड फाइल पे ही Zotero होगा. अगर आपने इंस्टॉल किया होगा Zotero, it will appear automatically. Most of the guys are getting it over here. ठीक है. पहले हम क्या करते थे, वर्ड ओपन करके हम रेफरेंस में जाते थे और फिर हम मैनुअली यहाँ इंसर्ट करते थे सारे चीजें, इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट फुटनोट, समथिंग समथिंग. ओके. हम अब इसे क्या करेंगे, रेफरेंस में न जाकर हम Zotero में जाएंगे और जस्ट लुक फॉर दैट specific literature which you want to add. For example, like let's give a try. So I'm writing something like
For example, Zotero is a good tool, something. ठीक है, अब हम यहाँ इस चीज को साइट करना चाह रहे हैं हमारे अवेलेबल लिटरेचर से, तो वी जस्ट क्लिक ओवर हियर। हमने कहाँ क्लिक किया? जोटेरो में जाने के बाद एड एंड एडिट साइटेशन, जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, वी जस्ट क्लिक ऑन दैट। फिर हमें एक पॉपअप अपीयर होगा यहाँ जिसमें स्टाइल पूछ रहे हैं। कई स्टाइल्स होते हैं रेफरेंसिंग, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच स्टाइल। आपकी आपकी इच्छा है क्या आप रखना चाह रहे हैं, आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर ले। फॉर सिंप्लिसिटी अभी के लिए हम कहते हैं एपीए स्टाइल, जो कि मोस्ट कॉमन एक स्टाइल है रेफरेंसिंग का। हमने इसे सेलेक्ट किया, ओके किया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? स्टाइल सेलेक्ट हो गया। नाउ अगर अनदर पॉपअप अपीयर हुआ, आप रेड स्ट्रिप देख रहे होंगे जोटेरो की तरफ से, एंड अगेन इट इज आस्किंग मी टू गिव सम, आइदर टाइटल दे दो या फिर कोई ऑथर का नाम दे दो जिससे के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो अभी के लिए हम क्या देते हैं? 2 आर्टिकल्स हमने ऐड किए हैं तो दोनों को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जस्ट चूज वन। आपने चूज कर लिया, अब जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव एडिट्स विद टू दिस साइटेशन। इसने क्या किया? ऑटोमेटिकली यहाँ एक इन टेक्स्ट साइटेशन ऐड कर दिया। Are you guys able to do this? Sir, please repeat once. Great, thank you. So I will repeat it again. So what I did, just write your text with whatever you want to write. What you are, अब ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? ये टेक्स्ट आ रहा है जो हमने उससे लिटरेचर से फाइंड आउट किया है। आप लिटरेचर को पढ़ते हो, उसमें से आपको कुछ भी सेंटेंस लग रहा है या कुछ रिजल्ट्स आपको कहीं दूसरी जगह साइट करना है, तो फॉर दैट पर्पस पहले हमने वो स्टेटमेंट लिख दिया, जोटेरो इज अ गुड टूल। अब हमें क्या करेंगे? ये स्टेटमेंट आया कहाँ से? तो स्टेटमेंट आया दूसरे किसी आर्टिकल से जो हमारे लाइब्रेरी में, वी जस्ट ऐड इट इनटू आवर लाइब्रेरी। ओके, उसके बाद क्या करना है? रिबन में हम गए, जोटेरो ऑप्शन मिला हमें, जोटेरो पे क्लिक करते ही, अदरवाइज आप में कुछ भी हो सकता है, होम हो सकता है, एडिट हो सकता है, हम जोटेरो पे गए, ऐड एंड एडिट साइटेशन फर्स्ट ऑप्शन है, हमने इस पे क्लिक किया। ऑटोमेटिकली यहाँ जोटेरो ओपन हो जा रहा है और ये पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल आपको यहाँ डालने का है, किस आर्टिकल को आप साइट करना चाहते हैं। तो पहले हमने जिक्र का दिया था, नाउ लेट्स ट्राई विद अनदर आर्टिकल व्हिच वी हैव। क्या है? आइडेंटिफाइंग समथिंग, लाइक आप टाइटल दे सकते हो या क्रिएटर दे सकते हो, व्हिच एवर यू वांट। तो हम क्या कर देते हैं? दूसरा देते हैं, आइडेंटिफाइंग। एक टर्म आप दे दो बस, आइडेंटिफाइंग। क्या कर रहा है? ये ऑटोमेटिकली हमारे लाइब्रेरी से ट्रेस कर ले रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो इट्स हेल्पिंग मी टू साइट दैट आर्टिकल। तो जस्ट हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ ये आ गया सारा साइटेशन विद जस्ट प्रेस, ठीक है। ये आर्टिकल हमें साइट कर दिया। हाउ Yes, डू वी sir. साइट I अ did. बुक विद जोटेरो? सो बुक चैप्टर का अलग है, जैसे आपने 2 चीजें हैं। बुक चैप्टर के लिए भी आपको सेम करना है। आपने कोई बुक चैप्टर यहाँ ओपन किया, ठीक है, यहाँ कुछ आपने ओपन किया होगा बुक चैप्टर, आपके पास सेम कॉलम यहाँ वो आ जाएगा, सेव टू जोटेरो। आप उसे डाउनलोड कर लेते हो और सिमिलर वे में आप बुक चैप्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है? 2 चीजें हमारे पास साइटेशन में तो आ गई है, इसे कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। बट अगर आपने जर्नल देखते होंगे तो इन टेक्स्ट साइटेशन के बाद एक लिस्ट भी होता है नीचे, करेक्ट? देयर शुड बी अ रेफरेंस लिस्ट ऑफ दीज ऑल आर्टिकल्स, कंबाइनिंग दीज ऑल आर्टिकल्स। वो अभी हमें नहीं आ रहा है, करेक्ट? तो उसे लाने के लिए सिंपल वे है, ऐड साइटेशन के बाजू में ही होगा ऐड एंड एडिट बिब्लियोग्राफी। जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओके, सो I got this error. I got this error because my cursor was over here in text. So it is saying that place cursor somewhere else. Otherwise ये क्या होता है? ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आप बिब्लियोग्राफी चाह रहे हो या इन टेक्स्ट चाह रहे हो। जब मैंने कर्सर नीचे लाया तो ये क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली एक बिब्लियोग्राफी बना दे रहा है, रेफरेंस, ठीक है। अब हम इसे बस हेडिंग दे देंगे, रेफरेंस लिस्ट, ठीक।
तो विच एवर आर्टिकल आई विल साइट ओवर हियर इन टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें यहाँ एक लिस्ट बनाता चलेगा। मेक सेंस? तो आप मुझे अब ये बताएं, इज इट इजियर देन वर्ड और डिफिकल्ट? इसमें एक चीज और है, आप ये सोचो, हमने आज अभी मैंने कौन सा स्टाइल लिया था, एपीए, हमने एक जर्नल में सबमिट किया और 4 दिन बाद 5 दिन बाद हमारे वहां से रिजेक्शन होता है। नाउ वी वांट टू सबमिट इट टू द अनदर जर्नल, ओके, दैट रिक्वायर अनदर स्टाइल। सपोज वैंकूवर चाह रहे हो, उनकी डिमांड क्या है कि आप वैंकूवर में दे। तो वर्ड में क्या होता है कि नाउ यू हैव टू डू इट मैनुअली, और वो क्या होता है, मशीन रीडेबल भी नहीं होता है कई टाइम। दूसरी कॉपी अगर हम बनाएंगे तो वो रीड नहीं करेगा कि ये साइटेशन है। बट इन एप्लीकेशन, इन टूल से मैनेज करने में ये एक फायदा होता है कि इट्स मशीन रीडेबल। आप किसी भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करेंगे, अगर जोटेरो इन्वॉल्व है, उसमें इंस्टॉल्ड है, तो इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि आपके ये साइटेशन है। दूसरी चीज, आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। लाइक कितना आप याद करोगे एपीसी के, एपीए क्या स्टाइल होता है, शिकागो क्या होता है, वैंकूवर क्या होता है, कुछ याद करने की जरूरत आपको। जस्ट you have, if you want to convert it into another style and submit to the another journal, just 2 or 3 clicks. Let's see कैसे करते हैं उसे। आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, हमने एपीए में डाला था, जस्ट चेंज इट्स स्टाइल। सो हमने क्या गए, सेम जोटेरो के प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस, हमने उस पर क्लिक किया, हम यहाँ गए और हमने वैंकूवर सेलेक्ट कर दिया। सिंपल, ओके क्लिक किया। अब क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्या किया, वैंकूवर में ले लिया। कैन यू सी द चेंजेस? ये न्यूमेरिकल ब्रैकेट में आ गया, करेक्ट? ठीक है, तो रेफरेंस मैनेजमेंट का टूल्स का काम इतना ही है। ठीक है, पहले क्या है, सिंपल, आई रिपीट, पहले हमें क्या करना है, लिटरेचर्स ऐड करना है लाइब्रेरी में। कई तरीके से हो सकते हैं, मैंने शो किया आपको, वहां से वो हो सकता है, और एक RIS का फॉर्मेट है, वो मैं आपको दूसरे एप्लीकेशन में दिखाऊंगा। अभी हम EndNote पे मूव करते हैं। तो आपको अगर जोटेरो से कुछ चीजें पूछनी है तो दिस इज द टाइम, अदरवाइज हम EndNote पे मूव करते हैं। I have a question, like how to save the data in backup, like in Zotero. What if you lose all the data and all the articles if something happened? So is there any backup, or is it automatically incorporated in this tool? So great question actually. So जोटेरो क्या करता है ना, जोटेरो हमें एक ऑनलाइन अकाउंट बना के देता है क्लाउड पे। ठीक है, जोटेरो का अपना डेटाबेस है, तो जोटेरो यूज करने से पहले हमें वहां साइन अप करना होता है। ठीक है, जब हम साइन अप करते हैं तो ऑल दीज रेफरेंसेस हमारे उस क्लाउड वाले अकाउंट में सेव होता जाता है। तो अगर मेरा आज ये सारा लैपटॉप लॉस्ट हो गया, सारा डेटा लॉस हो गया मेरे फिजिकल मशीन में, बट अगर मैं उसी अकाउंट को कहीं और सिस्टम पे लॉग इन करता हूँ, then I will be able to retrieve all my data. Got my point? Okay, so it's important to sign in first from the account, Yes, and yes. then use it. Okay, Yes. Thank you. It will be a personal account. You will be able to transfer it. You will be able to share those library with your collaboration team also. So it's better to do a sign up login and then use it here. Okay. Okay, thank you. Great. Since it is free, so it also allows like collaboration kind of thing, which restrict on like on other tools. Okay. So now let's move on EndNote. Or do you guys Sir, have any? सर एक प्रश्न था कि जब सर हम वेब पेज कोई होता है कोई आर्टिकल का या पेपर का, तो उसमें तो वो दिखा रहा है जेड कनेक्टर का, लेकिन जब कोई PDF डाउनलोड होता है तो PDF पेज पे वो लिख रहा है जेटरो जो आइकॉन बना हुआ है उसका, उस पर लिख रहा है जोटेरो कनेक्टर इज नॉट अवेलेबल ऑन एक्सटेंशन पेजेस। तो आपने क्या इश्यू हो रहा होगा कि आप, आई थिंक इसमें क्या हो रहा था, दोनों आपने ऑप्शन ओपन नहीं कर रखा होगा। जोटेरो आपने ओपन है, ये एप्लीकेशन वो करो कंफर्म, जो डेस्कटॉप वो है ओपन करके तब आप ट्राई करो। ये सर ओपन है सर वो, और इसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है सर वो सर PDF पेज डाउनलोड हुआ है, तो जेड जो आइकन बना हुआ है एक्सटेंशन का, वहाँ पे जब हम ले जा रहे हैं कर्सर तो लिख रहा है जोटेरो कनेक्टर इज नॉट अवेलेबल ऑन एक्सटेंशन पेजेस।
ओके, तो अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जब तक z है ना, तब तक हम इसे साइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट शुड अपीयर पेज लाइक दिस. ओके. ओके, अच्छा, ठीक है. तो वेब आप पेज PDF वेब पेज के लिए सर वो अपीयर हो रहा है जब कोई वेब पेज है ना, जैसे आर्टिकल का वेब पेज पे ही हाँ, लाइक अबाउट दिस. आर्टिकल है, या करेक्ट. लाइक दिस क्योंकि जैसे. इसमें, हाँ, तो आपको यहीं से करना वुड बी बेटर. अदरवाइज क्या होता है ना, मेटा डेटा लेता है ये एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है, इस पेपर से रिलेटेड मेटा डेटा इसे यहाँ पे मिल रहा है. दैट्स व्हाई डिटेक्टिंग कि दिस पेज कैन बी साइटेड इनटू Zotero. अदरवाइज पीडीएफ में कई मेटा डेटा लॉस हो जाता है. सो अगर सर कोई पीडीएफ हमारे पास आर्टिकल है तो उसको हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्या जोटेरो में इसमें? एज ए रेफरेंस नहीं कर सकते. उसके लिए अभी हम एंड नोट का एक तरीका बताते हैं. ओके. अभी एंड नोट में ये कंसर्न आपकी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी. ओके. ठीक है. अदरवाइज क्या हो करना होगा आपको, मैं बता देता हूँ. आपको सिंपल वे यही करना होगा, ऐड रेफरेंसेस मैनुअल. आप जर्नल आर्टिकल में जाइए, आपको यहाँ सारे ये फॉर्म फिलअप करने होंगे. ठीक है. तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. आई वुड नॉट रिकमेंड. उसके लिए कहते हैं एंड नोट की तरफ हम चलते हैं. ठीक है. Sir, I have one query. The way we are working using Zotero in MS Word, the same way we can also work in Google Doc also, no? Yes, Zotero also provide plugin with Google Doc also. You have Okay. to add, you have to add plugin on Google Doc, and then you can use the same account which you have just signed up on Zotero, and use the same library you have made on Zotero on Google Doc. Okay. Sir, one more question. Sir, what is the difference between using Zotero and Mendeley? There is no difference. There is no difference. Both are All the open things, source all the only. things, both are open source, both are free. It's like मेरे interest पे क्या है, with which I'm comfortable. Okay, sir. But sir, I see Zotero. I think it comes inbuilt with Word and document. But Mendeley, I think we have to install. नहीं, ऐसा ये वर्ड के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं आया है. जब चूंकि हमने जोटेरो इंस्टॉल किया, दैट्स व्हाई इट्स अपीयरिंग ओवर हियर. अगर हमने Okay. जोटेरो इंस्टॉल नहीं किया होता, सेम गोज विथ मेडली आल्सो. अगर हम मेडली इंस्टॉल करेंगे तो मेडली का भी अपीयर होता है. आई हैव नेवर यूज्ड मेडली, बट इधर अपीयर होगा. Okay. तो Okay, आप sir. जितने भी रेफरेंस करेंगे तो ये होगा. अगर हम अभी, अगर मैं, इफ आई जस्ट रिमूव जोटेरो फ्रॉम माय सिस्टम, सो इट विल डिसअपीयर फ्रॉम ओवर हियर. Okay, sir. Thank you. Thank you, ये sir. डिफॉल्ट नहीं है सर. ठीक है. सो शुड वी नाउ मूव टू एंड नोट वेरी क्विकली. So, you guys have downloaded? You have downloaded EndNote or not yet? Okay, let me see. Download, sir. Great. Actually, it provides free, like free trial for a month, I guess. Let me show the website also. So it is a paid software. Why it is paid, you will see. Like it provides it much more than your like citing on citing the literatures only. It also helps us to start this management tool from beginning while conceptualizing our research only. Like in literature review, before conceptualizing our study, what we do, we review a lot of literatures. So it is an inbuilt. What it does, it combines both, like search engine, search repository, you can say, like Scopus is a search repository, and EndNote. It combines both platforms, like citing references and combining those with in our online tools like Scopus directory or PubMed directory. So it's a combination of both those. So it makes our effort like very easy for us to do literature review, and then out of those select duplication, remove duplication, and many lot of things. So which we are going to see. So you can just buy EndNote, click sign up, and it will give you a setup to download. So without further delay, let's again this is the first page you will get. Or if you didn't get this page, this window, just click on file. Okay, just click on new. Okay,
So it asks to create a library. Okay, so I'm going to create a library. So again, I'm going to name it as a workshop reference. मैं क्या किया, एक लाइब्रेरी बनाया जो हमें, जिसमें हम सारा अपना एक प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट. अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सारे आर्टिकल्स हम फाइंड आउट करेंगे वो सारे चीज हम इसमें पॉपुलेट करेंगे, और अगेन अगेन सिमिलरली जैसे हमने जोटेरो में यूज किया, हम उसे वर्ड में ले जाके साइट करेंगे, सिंपल. बट टूल्स आप देख रहे होगे यहाँ बहुत ज्यादा ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, तो ये काम भी बहुत आपका इजी कर देते हैं. अनलाइक जोटेरो चूंकि फ्री है तो वो बेसिक प्लेटफॉर्म देता है. आप जब एंडनोट यूज करोगे तो एंडनोट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको अनलॉक हो जाते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी. करेक्ट. सो जब हमने फाइल किया तो एंडनोट, आई एम यूजिंग 19 वर्जन, सो इट्स अपीयरिंग 19, अभी शायद 25 चल रहा है. हमारी लाइब्रेरी का नाम आ गया वर्कशॉप रेफरेंस. ओके, तो यहाँ आप देख रहे होगे, आई डोंट गो इनटू दीज टूल्स, बट ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ एक फोल्डर नाम का है, फोल्डर आपको शो हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ लोकल लाइब्रेरी. इफ यू होवर ओवर इट, इट सेज इट्स अ लोकल लाइब्रेरी मोड. सो ऑल द थिंग्स व्हिच आर सेव्ड इनटू योर सिस्टम दैट विल अपीयर हियर. दिस इज ऑनलाइन सर्च मोड. मैं क्या बता रहा था कि लाइक ये क्या करता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंबाइन करता है. ऑनलाइन सर्च मोड, अब यहाँ हम कर सकते हैं पबमेड को इंक्लूड कर लिए, कई सारे लाइब्रेरी, स्कोपस रिपोजिटरी हमने यहाँ वो कर लिया, कनेक्ट कर लिया, और भी कई सारे वो है. तो ये हम कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन दिस, इट्स सेइंग दैट नाउ यू आर ऑनलाइन मोड, एंड इट्स गिविंग अस ऑप्शंस लाइक क्रॉस रेफ. आपने नाम सुना होगा क्रॉस रेफ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लिस्टा, पबमेड, वेब ऑफ साइंस. So all the repository, all the major repository, I can say, like if you click on more, so it gives like 100 of library options, more than 100, I guess I've never counted. बट आपको क्या दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप यही बैठे बैठे इसी एप्लीकेशन से आप कोई भी लाइब्रेरी को कनेक्ट कर सकते हो एंड लिटरेचर सर्च कर सकते हो. जैसे अगर पबमेड इज ए फ्री, तो यू डोंट नीड टू लॉग इन आईडी समथिंग. सो आप सिंपल पबमेड पे क्लिक करोगे और ये देख रहे हो आपको ये चेंज होगा कुछ. आपका ये एक सर्च इंजन आ गया, एडवांस सर्च इंजन इसे कहते हैं. ठीक है, इसमें कई चीजें आ गई, कई चीजों से आप सर्च कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको पबमेड से कनेक्ट करेगा, और बेस्ड ऑन आवर कीवर्ड्स ये फाइंड आउट करके हमें कुछ आर्टिकल्स दे देगा. करेक्ट, अभी हम इसे देखेंगे एक्शन में. थर्ड टूल क्या है, ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी है, जहां हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिक्स होते हैं. तो सारा, अगर हम कुछ पेपर्स हमने ऑफलाइन में रखे, कुछ हमने पबमेड से मंगाया, तो कुछ ऑनलाइन से, दोनों हमें यहाँ दिखेंगे. लिस्ट ऑफ लिटरेचर्स, आर्टिकल्स सब यहाँ दिखेंगे. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, कॉपी टू लोकल लाइब्रेरी. हमने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पे वही है जैसा हमने स्टाइल्स देखा था, वैंकूवर है, एपीए है, एनोटेटेड है, शिकागो है, स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसेस ये है. कॉपी टू लोकल लाइब्रेरी हमने कुछ आउटसोर्स किया लाइक पबमेड से, और हम उसे सेव करना चाह रहे हैं लोकल लाइब्रेरी, सिंपल. दैट इज न्यू रेफरेंसेस. हम क्या बात कर रहे थे कि रेफरेंसेस ऐड करने का. तो सिंस वी आर इन ऑनलाइन मोड वी कांट ऐड, बट जैसे ही हमने ऑफलाइन में गए, नाउ वी कैन ऐड. ओके, सो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये एक इस तरीके का पेज जैसा वहां अपीयर हो रहा था जोटेरो में, लाइक वी कैन फिल ऑल द इंफॉर्मेशन मैनुअली व्हिच वी डोंट वांट हियर. ओके, हम ये नहीं चाहते. यहाँ क्या है, ऑनलाइन सर्च, सेम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फुल टेक्स्ट साइटेशन, हम अभी सब देखेंगे एक्शन में. ये रेफरेंस हो गया, सिंक लाइब्रेरी, शेयर लाइब्रेरी, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन. सो जस्ट डू समथिंग, लाइक जस्ट ट्राई समथिंग. ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ गए ऑनलाइन में. हम क्या कर रहे थे जोटेरो में, हम गूगल जाना पड़ रहा था आर्टिकल लाने के लिए. करेक्ट, हम वहां नहीं जाएंगे अभी. हम बैठे बैठे हम चाहेंगे कि इसी एप्लीकेशन से हमारे पास एक कुछ आर्टिकल्स आ जाए. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑनलाइन पबमेड. इसे हमें कोई ऑनलाइन सर्च का रिपोजिटरी देना होता है. ऑथर्स पे हम सर्च कर सकते हैं, ईयर पे सर्च कर सकते हैं, और टाइटल पे सर्च कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, हम इसे ऐड आउट कर सकते हैं. ठीक, लेट्स डू टाइटल सर्च. कैन यू गिव मी सम टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ, सिंस ये पबमेड से. ठीक है, पबमेड क्या है, पब्लिक मेडिसिन. चाइल्ड तो यहाँ न्यूट्रिशन या ज्यादातर, ग्रेट. तो इसलिए हमने हेल्थ से पूछा. अगर अदरवाइज वेब ऑफ साइंस पे जाएंगे, स्कोपस पे जाएंगे, वी कैन ऐड
many topics. ठीक है, क्योंकि PubMed is most optimized for health repository. So let's do child mortality, right? Child nutrition or mortality? क्या था? Child nutrition. We just use child nutrition, and again if we just search, here you getting search. So it is doing search. Where it is searching? It's searching whole PubMed directory. And what it is giving? Like it has found like 1500 records something. Do we want all the 1500 plus records over here? No, we don't want that. So we can adjust that. If you want, you can do that. क्योंकि ये लिटरेचर जब हम बोलते हैं एक सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, उसमें हमें चाहिए होता है, तो वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. बट अभी हम डेमो ले रहे हैं, तो जस्ट यूज 40 or 50 as per your requirements. We can manipulate this number and click OK. So what it is doing, like showing this much reference, magic. Something happened, right? What happened? It has simply, like in minutes, in seconds, I can say, it has populated our library with 50, showing 50 out of, in bottom left, you can see 50 out of 50 references in group. That means it has retrieved this much of like 50 articles which has child nutrition in its title. So all the articles will have child nutrition or something in their title. That's why it's appearing over here. Simple. We can use any other online search app. Yes, you can, but PubMed is free. Web of Science, you can use this much of library. So some are free and some are paid. So if they are paid, you will need to have some login. For example, like Web of Science is there, so just try Web of Science. So it will ask you to log in first. So I'm searching on Web of Science. No matching reference. Don't know why. But yes, you have to add logins for Scopus or something. Like these many libraries are there. Yale, some universities are also enrolled here. University, Medline is there. Lista is there. So based on your requirements, you can add. Or I will show another way also where you can use these things and then import those results over here. You can import such a library from EndNote, from Scopus on web also. I will show. This is the first way by which you can populate our library. Okay. Abhi tak ka clear hai? Let's move to another kind of from other way where we can use this. So what we do right now, it's in online mode. So if I close the EndNote, all the data will be gone. I won't have मेरे पास कुछ होगा नहीं. तो हम क्या करेंगे? Just select all by Control A. I have selected all the libraries, all the articles in my library, and again we saw this copy to local library. If you want to use all 50, we can select all. Otherwise, be selective, like 2 or 3, and then copy to local library. I just click to local library, and it will appear over here. Okay. So if I go to now local or integrated, we will see like recently added 50 copied references 50. Now if I close my EndNote over here and again I will open anytime, it will appear here. But I will lost rest in online mode. Okay, that's why it's very necessary to do this. Copy to local library. Correct. Now what do I want to do? I have just made a library, or wait, just first let's group it. You can make groups based on your themes. Like I want to use these 50 articles in my introduction of, or say any article, like any project, like for child nutrition. This is from child nutrition. I'm just making a group, and I will drag and drop all the 50 papers over here. So just
go to local library again, select all, Control A. I selected all, and just drag and drop. So I'm just selecting and dragging and dropping in child nutrition. Okay, now the child nutrition has 50 articles, 50 literature, which we can cite. Now, any question? Any question? So can you do it for one more topic, please? Yes, we will do. Again, we have time constant. So let's try another topic. Okay, give me topic. Simply, we went into again local library, or sorry, online mode. Give me some topic. Loan on Gen Z. Debt loan on Gen Z. Okay, so since I'm using PubMed over here, so I don't think it will appear here, but let's do another way. Okay, so let's load on Gen Z. Okay, or anything else I have to add here? Amit, can we use Google Scholar or Scopus for this? Yes. I'm using it on Google Scholar. Another way to import libraries over EndNote. Okay, so just write Google Scholar. So it will automatically open Google Scholar for me, and it will search over there. So guys, how many of you use Google Scholar for your literature search? Give me thumbs up. Those who use Google Scholar. Great. We have many. Okay, great. So it's for our participant. Instead of searching your research on Google, we should research. We can search it on Google Scholar, PubMed, or Scopus, because these are the specifically dated for the research article and research material. So you will not get unnecessary garbage which usually we get on the Google. So whenever you want to search something related to research or peer-reviewed journal or peer-reviewed research paper you are looking for, go on Google Scholar. Google Scholar usually provide diverse discipline paper and research article from diverse discipline. PubMed you can use for the medical and paper related to healthcare and health finances and health economics. And Scopus and Google Scholar generally provide research paper from various disciplines. So I think Google Scholar can be used for all disciplines. Thank you so much. So I have searched loan on Gen Z. Okay, so this much article have appeared on Google Scholar. That's simple till here. Now what we can do, whichever article we want to add in our literature, just you will find save over here. Just click on save. So it will ask me to make a group. Okay, so let's make a group. So where do I want to put that these literatures into my local library, in my cloud library, which is with Google Scholar. So just make it a loan or something. I'm putting it loan, done. So as many as I can add, as many as article into this same folder. So I'm doing like loan. Okay, done. Similarly, I want this article to go into loan. Okay. And one more. I take one more. Suppose this one. So can do. So I think I have 4 articles, or you want me to more? Like let's take more. So now if I go to my groups, my library, what I did, just on these 3 dashes, click here, my library. So it will show me like all my groups. Can you see on the left hand side? So it is showing me like all my group. So if you click loan, here what we get, all the 5 articles I just selected. Correct? Now what we do, we can export all. The option will appear here. Export all. Click on export. It is saying like in which format do you want to use this export, to put that export. So I'm using EndNote. Okay. Just click on EndNote. तो क्या होगा, EndNote से एक फाइल डाउनलोड होगा हमारे यहाँ.
तो एक फाइल डाउनलोड हुआ दैट इज नेम citation.enw सिंस इट इज एन EndNote लाइब्रेरी. हम क्या करेंगे, जस्ट गो इनटू फोल्डर वेयर इट इज डाउनलोडेड and just simply either click double or there is another way to import this library also, but for now I will just double click on it and automatically EndNote will open and this whole like 5 articles will be imported over here. Are you able to see? Not now. So since this is imported into my offline, so I went into integrated imported references on my left. Are you seeing these imported references 5? So these are the articles I have imported from Google Scholar. Okay, so but this is not child nutrition. So what I can do to arrange it more? To arrange it, I can make another group on loan. So let's do this. And now I again just simply drag and drop over here. Selected and dropped here. So now this 5 papers will remain for me. But there is another, there is some issue with my citation over here. Like authors, it should not be like MLO Yusuf Rombe percentage J international something. There is some issue with this citation, which we usually get if we import directly from Google Scholar. So for that purpose, I don't usually prefer Google Scholar. Rather, I will go into the original website or original journal page and then download citation from there, because Google gives us these kind of errors in its metadata. So, but to do this, we can correct it on our own system. So how to do this? Just click on the references जिसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं. सपोज मैंने यूसुफ रोम्बे का लिया, यहाँ रेफरेंस पे गए, इट विल अपीयर ओवर हियर, एंड यहाँ से जस्ट हमने नाम चेंज कर दिया, लाइक हम जर्नल से हटा देना, जस्ट डिलीट इट. If you click somewhere else, it will ask you to save this change. Click yes, and yes, now it's cleaned over here. Are you able to see change? So if you import, I usually don't use Google Scholar to import, but if you have no other means, import and please recheck these attributes, like is it cleaned or not. Okay, so it will be for your own benefit. Now someone asked me to import from PDF, correct? So let's go, if I find some PDF, if like I have some PDF, I just want to import that into our reference library. Okay, so go to, so just give me some topic on which I can get some PDF and how to import that into our reference. Okay, give me some topic, please. Mental health. So we can get any report like NFHS report or multidimensional energy poverty report. Okay, I will show both, one report and one document. So NFHS report is one, I noted, and the document, a journal article, what should you recommend? Multidimensional energy poverty. Multidimensional. Sorry. So this feature is only available for recent publication, because what does it do in background? Let me say, क्या करता है ये कि PDF जब हम डाउनलोड करते हैं, अभी लेटेस्ट कुछ PDF होगा लाइक से लास्ट 5 years, तो ये क्या करते हैं, PDF के साथ एक मेटा डाटा डाउनलोड होता है. वो हमारे प्रीवियस लाइक अगर हम हिस्टोरिकल लाइक 2000 के अराउंड जाएंगे तो वो हमारे पास वैसे PDF नहीं होते थे मशीन रीडेबल, लेकिन अभी फिलहाल में आने लगे हैं कि अगर हमारे पास PDF है और वो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ एक मेटा डेटा भी इंपोर्ट होता है जो कि हमारे सारे रेफरेंसेस को रीड कर लेता है और ऑटोमेटिकली वो जो टैब्स है फिल कर देते हैं. So that's what I'm going to show here, but don't try this in old publications. ठीक है, तो आपको ये फीचर वहां नहीं समझ में आएगा.
तो क्या करते हैं, इस पीडीएफ को, ये नया है चूंकि 2024, तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ शो होगा, बट अगर मैं ये 2004 के किसी आर्टिकल पे करूंगा तो ये शो, वो चीज काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं, मेरे पास अभी सिस्टम में क्या है, एक पीडीएफ है, करेक्ट। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंटीग्रेटेड पे ही हूँ मैं अभी, और यहाँ इंपोर्ट पीडीएफ, इंपोर्ट का ऑप्शन है। हमने इंपोर्ट पर क्लिक किया। हम क्या करेंगे, जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज द पीडीएफ इन माय डाउनलोड, सेलेक्ट करने का, ओपन करने का, और इसे बताने का ये क्या है। तो हम जस्ट सेइंग लाइक इट्स अ पीडीएफ, import all the observation, no translation required, simple fill-ups, just import. सो क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारे पीडीएफ से ही सारे इंफॉर्मेशन को लेके यहाँ हमारे पास एक बना दिया इसने डायरेक्ट, ठीक है। एक हमारे पास रेफरेंस आ गया, यही था ना, आप टाइटल वेरीफाई कर लो, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ है, ठीक है। और क्या हो रहा है, साथ साथ में चूंकि हमने ये पीडीएफ से लिंक किया है, तो इसकी पीडीएफ, ये क्लिप जैसे साइन आ रहे हैं, तो दैट मींस इट हैज इट्स पीडीएफ एम्बेडेड ऑन दिस रेफरेंस। सो हम उसे अगर पढ़ना चाहे तो वी कैन आल्सो डू दैट ओवर हियर। सो जस्ट क्लिक ऑन पीडीएफ, यहाँ आपको पीडीएफ का एक प्रीव्यू दिख जाएगा। इफ यू वांट टू गो डीप इनटू दैट पीडीएफ, जस्ट enlarge it and treat it as a पीडीएफ रीडर, ठीक है। आपको वही सारी चीज फैसिलिटी मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, हाईलाइट करने की, अंडरलाइन करने की, टेक्स्ट को वो करने के लिए, एंड जस्ट सेव, सो इट विल रिमेन इन योर लोकल मशीन, ठीक है। तो एक वे ये है। चलिए अब हम चलते हैं एनएफएचएस का काम है। एनएफएचएस को कैसे करेंगे, एनएफएचएस रिपोर्ट। तो फॉर दैट फर्स्ट यू विल हैव एनएफएचएस रिपोर्ट ऑन योर सिस्टम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट में ये बहुत चैलेंजिंग चीजें होती है कि रिपोर्ट में क्या होता है, साइटेशन नहीं होता, and we usually don't get their citation on website also. For that purpose we will use ChatGPT. एक पहले भी कोई पूछ रहे थे कि हमने रिपोर्ट को वो करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इट्स बिट टेक्निकल बट यस वी कैन डू दैट, ठीक है। ये सपोज ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो ChatGPT को क्या बोलेंगे, मैं लॉजिक समझा देता हूँ। हम ChatGPT को ये देंगे और बोलेंगे कि इसके इंफॉर्मेशन पे रीड दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर मी एंड मेक अ साइटेशन या बिब्लियोग्राफ या आरआईएस फॉर्मेट में, एक हमें इसके टेक्स्ट निकाल के देने, ठीक है। तो वो कैसे निकाल के देगा, लेट मी शो यू। तो हमने क्या किया, ChatGPT पे गए, हमने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ डाला, रिपोर्ट जो भी हमने डाउनलोड किया है, एनएफएचएस साइज, ठीक है, एनएफएचएस पेज 2। तो एक प्रॉम्प्ट हमें इधर सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट अ citation in .ris format, ओके। क्रिएट इट्स citation कर देते हैं, बेटर, ठीक है। सिंपल प्रॉम्प्ट है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और हमने ये श्योर लिखने का .ris फॉर्मेट, क्योंकि हम क्या करेंगे ना, .ris फॉर्मेट में होगा, ये रीडेबल होगा फॉर EndNote, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ChatGPT इस रिपोर्ट को पढ़ के कुछ इंफॉर्मेशन ये ऑटोमेटिकली फिलअप कर देगा जो हम इसे चाहते हैं, एंड देन अगेन वी कैन इंपोर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू आवर EndNote. Let's see if it is able to do that. Network connection lost. और अभी EndNote के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ AI की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं। हमारा EndNote मोर और लेस हो गया है कवर, बेसिक चीजें यही है। हाँ, EndNote में एक ये बच गया है कि हाउ वी यूज आवर लाइब्रेरी टू साइट दोज इन टेक्स्ट साइटेशन, ओके। तो वो कर लेते हैं तब तक, लेट इट बी हियर। तो ये डॉक्यूमेंट था हमारा। सर ये जो आपने कहा कि रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग साइट कर सकते हैं, बट सर सिंस EndNote तो पेड है, तो क्या Zotero में हम लोग पीडीएफ या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो होती है उनको साइट कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, आप उससे Zotero में भी कर सकते हैं।
Okay, ये sir. रिपोर्ट है NFHS रिपोर्ट, हम इससे साइटेशन बनाएंगे और एक RIS फॉर्मेट में सेव करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए इसने क्या किया है, एक कोड्स कुछ लिख के दिए हैं जो हमें पता भी नहीं करना है क्या है, बट इंफॉर्मेशन इसने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दैट रिपोर्ट, करेक्ट। नाउ दैट सिंपली जस्ट कॉपी दिस थिंग, go to your desktop or any folder, whatever you want. So I will go to my desktop. I will go to my download only. So it's not opening well. So what we will do from this information, we will create a text file, okay? Text document. I'm coming to my download folder. So just new and create a text file over here. So it is giving me this text file and open it. So the text file will open like this, and now I'm just pasting that information. Okay, I'm not doing anything but pasting that information which we extracted from ChatGPT. Just go to file and save as. This is a tricky part, so I would like your attention. What I'm doing, I'm just saving that information. Doing save as, not save. Save as NFHS. Just give any name you want to identify it as, and put .RIS. I'm putting RIS extension because it will be readable by EndNote. That's why I'm using .RIS. So I'm putting NFHS.RIS. Okay, save. So what it will do, it has created me a citation, this one, a RIS format which has named NFHS. Now if I open it by double clicking, so it will. So what happened now? It's open Zotero. So it's importing into new collection or whatever. So I want, okay. So now it will add this reference over here. It will come over here. So what it is doing, it is opening by default Zotero because I installed two applications. So unless you specify that where it should get open, it will open on by default here. So Zotero. So what I did, now I'm getting all the information from that report. Now I can use this report in my in-text citation. Make sense? Okay, great. So this is Zotero. It opened by default, but now let me show how you can use the same file in EndNote. .ri is very like handy format. It can be used in many reference management tools. So I open with, so I right click, open with, choose another app. It will say to us EndNote. Now I'm specifying, now let it open into EndNote only. So just once. Again, it's importing into EndNote, correct? We go. Okay. Are you able to see this? The whole information I have extracted from that report without without typing a single word manually. That's how, and you will find like something does not appear right on your text citation. You can come and manipulate it here. Like this, it will come here. So if you don't want to write author in this format, you can use abbreviation like suppose IITS, just simple IITS, just save it and it will appear like that on your in-text citation. Make sense? So I think we don't have much time. So without further ado, let me close the references part here. Now move to core AI. Okay. Before moving to AI, again, you guys have any question? If
you guys have any question, you can ask me. I have a question. Like I have downloaded, for example, I have a inbuilt library within the desktop. I have all the articles, and now I want to export it to the Zotero. So the references will remain the same, or it's just like it is easy to handle it all together while exporting. Yes. So on which platform, on which system did you make that library? It's OneDrive. I have Okay, like all the documents saved in OneDrive with the institution ID, and like because I never use Zotero, so if in case I want to export all those folders, files, and the documents on which I'm working in Zotero, so that it can directly come on the Word file. So how to do that? Is it Yes. So first you will have to make library of all that files, because it won't okay? read, like Zotero won't able to read PDF or docs or whatever format it is. So I would recommend to go and get the citation, make citations as I just shown, like it either be it Google Scholar or either be it online going through journal page or either through ChatGPT. That depends on your choice. Okay, You okay. import those library and try to save it as RIS format. If you have saved that library into RIS format, you can easily move that library to the other system like EndNote 3, EndNote, or mainly, or in future you can also move that library very easily. But I think for now you have that in various types of documents, so that won't be readable by any reference management. Okay, thank you. Any more questions, or should we move to AI now? So what I'm going to show, I just in the beginning I mentioned I will show you two AI tools. First, what it do, like in literature review, in literature, basically in citation also. So there are two terms which we get ourselves. First is citation, and another thing is references. If you guys, any of you can mention the difference between citation and references. The two keywords here, like citation and references. So how do you distinguish both these keywords? If any of you. So let me try. Suppose this, take an example. Suppose I have published a paper. Okay. I'm writing a paper. I have published a paper right now. Okay. So I have written my paper based on available literature in the past. Okay. So I will have a reference list. So those articles I have used is called references for me. Okay. Now I have published this paper, and now in future someone else will write that my paper, follow my paper and write their own research. So I will get a citation. Okay. So keeping reference on me, the previous literatures to me are my references, and future, the upcoming researches on my topic are citations for me. Okay. There's two things, keeping references on me. Got my point? Some idea? That is called forward and backward linkages also. Okay, so if you want to do some literature review, it is always recommended to follow references as well as citation. Like if I don't know, like share my screen. Okay. So for example, this is the paper. This is the paper. So this paper has this much references. Okay. This is the references. Okay, that is the backward linkages of this paper. Now, if someone comes up another articles over this article and using this article as a reference for their own literature, it will forward linkages for this article. Okay, so how to combine those? Sometimes our guide or someone says that
always read references of your citations also. That will give a number of articles for our own research. So let's go and see how do we connect those articles, references with citations. Okay, and we will be using an AI tool that is free of cost, and that is called Research Rabbit. Research Rabbit. Okay. If you will need to sign up over here. Okay, so you will see this face, the screen like this, a blank screen. So you can make a new collection over here. So I'm going to make a new collection. So again, similarly, I can name it as a workshop. Okay. So now you are seeing that I have a new collection named workshop reference, and it doesn't have any papers. So what it does, I have to add few papers to get AI learn about what I'm looking for. So just like a training data, we need to provide 2 or 3 papers on which it will develop its database and learn from those keywords and suggest us or recommend us few articles. Like you were seeing, like similar work, earlier works, later works. These will all fill up after we get some papers over here. So again, give me some title, give me some topics, or we can just import our Zotero collection over here also. You might be seeing here. So Zotero is like we can embed it everywhere, not everywhere, but most acceptable format is Zotero collection. So if we create database in Zotero, it can be easily combined with other platforms. Now I would like to have some DUI. Let's take DUI of this article. Okay. So identifying the facilitator of Iran alcoholic beverage black market presenting solutions. So let's get DUI. So this is the DUI. And if I put my DUI here, it will identify this paper from here. Okay, and again on the right hand side you might be seeing like plus RIS. RIS again I said it's the universal accepted format of reference management system. So you can use RIS, you can either import Zotero collection or add using DUI, which I'm using right now. So now one article is populated over here. Okay, so similarly, I can look for another similar article. Again, I will like black market. Now I'm using keywords, not using any DOI. So it will automatically look for these keywords in its directory. Black market. Now it's asking me powered by PubMed. That again, it will connect PubMed because PubMed is free. Okay, let's select PubMed only. Now it is showing no result area because this is not a health topic. So let's say another article, all subject areas, not PubMed specifically, but now I have converted it another. You can search for articles in another repository also. So I'm just randomly adding to few articles into my collection. You can do it similar way for your own. Okay, so I've given 3. Okay, based on these 3 or 4 articles I've given, it is suggesting me like similar work. 380. And now see the magic. If I click on similar work 380, what it is going to give me a network of connection. It is building a connection, like how this paper is cited. For example, the wave is visible to you. Please confirm if the wave is visible to you all. Yes, sir. Great. So just try to interpret this wave. So what it is doing, the connection it is showing like actually the size shows the how many citation or reference it has had, and the arrows are showing how these articles are connected to each other.
For example, Futagami, something 2022. These many papers have cited this paper, or this paper has cited these papers. So it helps us to identify the relevance of paper. The more connection it has, the more relevant the paper is. Correct? Sir, basically, is it showing that more complex web will make more relevancy if the Not paper is complex. cited? I would the not web. say complex, but yeah, I would cite the connection. Number of connection would make that paper more relevant. Okay. So because this paper in the center has more connection, or this connection Miyamoto 2020, so this paper becomes more relevant for us to consider when we are working on this particular topic. Okay. Otherwise, if we don't do this kind of analysis, lot of paper, we usually miss lot of papers relevant for our research. It is a tool which you should consider while reviewing your literature in the initial phases only. Okay. And again, it is a far extension. Like if we click and this thing, and we can add to our collection, the add to workshop reference, which is our collection, and we can refresh it. We can add as much as article we will provide. It will give us more relevant literature. Okay. Now, once we have made this collection as per our needs, we can just import these all collection. Yeah, like I started with how many? Like 4 now. I have added 2 or 3. Oh, let's add more. Suppose this article, I find this article relevant, so I click just add to workshop reference. And again, if I find another article, like suppose from here only, let's take Gemori 1994, add to workshop reference. Okay. So now I have around many articles. ठीक है, हमारे आर्टिकल्स के नंबर बढ़ गए. ठीक है, क्योंकि हमने और भी रिलेवेंट लिटरेचर फाइंड आउट किए, कनेक्शन फाइंड आउट किया, और हमें लगा कि रिलेवेंट है तो हमने उसे वो किया. तो अब हमारे पास 4 से like 6 or 7 हो गए हैं. तो we want to use this in our EndNote or Zotero. So are you seeing this export papers? Just click on RIS, again RIS. Okay, so if we click on RIS, a file will be downloaded from Research Report Rabbit, and now we can import it in either in Zotero or EndNote. Okay, so right now I'm importing it in EndNote. So let's see if it is able to read in my EndNote. Okay, so it's taking time. It's opening my EndNote automatically because I have closed my EndNote, but it is opening my EndNote and importing simultaneously. Great. So now I got 7 or 6. I mean 6 references from Research Rabbit. Okay. Do you guys find this tool relevant for your own study? Please, can you repeat this procedure? Yeah, sure. Sure. So what we did, we just added few reference works. Okay, reference works, I mean like the theory which are building. So 2 or 3 papers, just add 2 or 3 papers from here, add papers. Okay, after adding 2 or 3 papers, what I did, I let AI work for me. So based on these 2 or 3 papers, it's looked after, like it searched around 1200. Now it's coming like 1200. Earlier it was 300. So as much as keywords it will get, it will update its recommendation. Okay, and again another feature, either go to a similar work or go to later work. Later work, again, how many articles have cited this paper. So if I click on this paper, it will digitize like all references also. Showing right now, yeah. Usually it is showing that this article has 31 references. And if I want to read all those 30 references, what we can do, I can just click on references, add all into my, export it into RIS format, and again
include in my EndNote or Zotero, whatever. You can do this way also. So it makes us our task very easy. Otherwise, what we will have to do, हमें क्या करना होगा, हमें एक एक रेफरेंस को गूगल सर्च करना होगा, उसे फिर साइटेशन डाउनलोड करनी होगी, फिर हमें इंपोर्ट करना होगा. बट नाउ व्हाट वी कैन डू, RIS फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है सर, यहाँ से वही तो मिस हो गया. ओके ओके ठीक है. हमने क्या किया, हमने अपने अर्लियर वर्क्स या अभी के वर्क्स में हम गए, हमने एक एक आर्टिकल को पहले हमने कलेक्शन में ऐड कर लिया. ठीक है, अब हमें लगता है कि हमारा कलेक्शन सफिशिएंट है. नाउ वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पेपर्स. तो आप ये सब कट कर दें, और जैसे ही हमारा ये कलेक्शन खुला हुआ है, नीचे में एक्सपोर्ट पेपर्स आ रखा है. ठीक है, एक्सपोर्ट पेपर्स में RIS भी आ रखा है. आप जस्ट RIS पे क्लिक कर दें, आपके लिए एक फाइल यहाँ डाउनलोड हो जाएगा. ओके, नाउ यू कैन ओपन दिस फाइल इनटू एल और Zotero, व्हाटएवर यू. ठीक है, तो अगर हम EndNote में इसे डालते हैं तो ये क्या हो रहा है, इम्पोर्टेड. हमने 6 पहले किए थे, एक मैंने नया ऐड किया, तो ये पेपर आ गए ऑटोमेटिकली. 7 हमारे पास. करेक्ट. नाउ अगेन वी कैन पुट दैट इनटू अनदर ग्रुप. ये अगर हमें फ्यूचर में यूज करना हो तो हम खुद आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है, तो हम क्या नाम दें इसका, क्या नाम था, ब्लैक मार्केट. सपोज ब्लैक मार्केट से हमने स्टार्ट किया था. क्या किया हमने, कंट्रोल ए या सेलेक्ट ऑल, और हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैक मार्केट. तो नाउ वी हैव 7 पेपर्स फॉर ब्लैक मार्केट, 54 चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड 5. ठीक है, मेक सेंस. तो ये टूल्स बहुत इजी होगा, बहुत हैंडी होगा अगर आप लिटरेचर रिव्यू फेज में इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं. ठीक है, हमने चैट जीपीटी देख लिया, चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, हमने रिसर्च रैबिट को देख लिया. अब हम चलते हैं अपने कोलैबोरेशन फाइल AI के पास, जो इस वर्कशॉप को स्पॉन्सर भी करते हैं. तो ये है वेबसाइट .5.3. एक्सक्यूज मी सर, सर बस रिसर्च रैबिट का एक छोटा सा मेरा डाउट है कि हम वो जो मैप या जो भी जो कनेक्शंस दिख रहा है, क्या हम उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं? यस, हम उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं. गुड क्वेश्चन. तो हम चलते हैं, हम उसे और देख लेते हैं. एग्जांपल, सपोज सिमिलर वर्क पे गए, तो ये क्या करता है, हमारे लिए मैप बना के दिया. नाउ आप देख रहे होगे नीचे एक ये भी है ना बटन, जूम इन, जूम फीड आउट, और ये है नीचे डाउनलोड का बटन आ रहा है. ठीक है, तो डाउनलोड करने से पहले मैं क्या रिकमेंड करूंगा, आप क्या करो, इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, क्योंकि कई बार ये बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है. तो जैसे मैं इसे ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ ना, एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आप पहले इसे उस शक्ल में ले आए, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें डाउनलोड, और दिस JPG फॉर्मेट में ये डाउनलोड किया मेरे पास. देख रहे हो. What is the use of downloading this? यूज कुछ नहीं है, बस हम कभी क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के टाइम में दिखाना चाहते हैं कि कितना रिलेवेंट है. ये जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करोगे तब ये नेटवर्क मैप काम आता है. बिब्लियोग्राफी एनालिसिस की रिलेवेंसी ऑफ क्या है, मतलब लिटरेचर कैसे ग्रो किया है या कौन से थीम इमर्ज हो रहे हैं, तब हम इसे यूज करते हैं. Okay, okay. अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसकी. ठीक है, और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में और भी इससे एडवांस टूल्स है, तो हम उसे यूज करते हैं. ये तो हमें कुछ ज़्यादा खास आइडिया नहीं दे रहा है, बट ये जो मैप है, जो नेटवर्क एनालिसिस है, उसमें हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं. एक चीज़ और है, यहाँ नेटवर्क में है ग्राफ टाइप. अगर हम इसे टाइमलाइन कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये अरेंज कर दे रहा है हमें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग. यू कैन सी लाइक 1994 में ये पेपर आया था, 2007 में कौन कौन से पेपर आए, 2019 में कौन से पेपर आए, तो ये वर्टिकली शॉर्ट आउट कर दिया एज पर आवर टाइम. वहाँ क्या था, नेटवर्क में था, अब हम इसे टाइम ड्यूरेशन में. अब इससे क्या होता है, थीम कैसे इवॉल्व हुआ है किसी रिसर्च में, इससे हमें पता चलता है. ठीक है, रिलेवेंट लगा ये आप लोगों को? यस सर, थैंक यू सर. ठीक है, अब इससे एक मैं नाम दे देता हूँ, बस लिट मैप करके एक है वेबसाइट, सिमिलर काम करता है, बट वो पेड है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 आर्टिकल्स के ग्रेडिंग्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी. वहाँ एक सेपरेट वो मिलता है, फिल्टर आता है, जिससे आप क्वालिटी ऑफ पेपर भी अलग कर सकते हैं.
तो दैट बिकम्स मोर रिलेवेंट फॉर अस, क्योंकि क्या होता है इसमें कई होते हैं ना, कई सारे ऐसे पेपर्स आ जाते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते या क्वालिटी उनकी स्टैंडर्ड पे नहीं होती। तो सेम काम है, बट वहाँ हम एक फिल्टर यूज कर सकते हैं, जो फिल्टर यहाँ में से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया, तो लेकिन वो पेड है, लिट मैप करके है, गूगल करोगे आप मिल जाएगा। ठीक है, हम अपने दूसरे पेड एआई की तरफ चलते हैं, साइट एआई। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको लॉग इन करना होगा, आईडी बनानी होगी। ठीक है, और फर्स्ट आपको अपीयरेंस कुछ ऐसा मिलेगा, वेबसाइट आप नोट कर ले, साइट एआई। और इस चीज का है कि ये चीज हम जो भी बता रहे हैं, इसमें आपको इस वर्कशॉप के बाद आई गेस एक लिंक जाएगा, आप लिंक रिसीव करोगे और एक कूपन कोड होगा जो यूज करते हो आप, तो आपको 1 मंथ का ट्रायल पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, यूजुअली ये 7 डेज का देते हैं आफ्टर योर साइन, बट हमने बात की तो हमें ये 1 मंथ का प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स सी वो कितनों को प्रोवाइड करते हैं, आपको रिसर्च वाइज की तरफ से मिल जाएगा, उसमें वो लिंक होगा और कूपन कोड होगा, यू कैन यूज एंड यूज इट फॉर रिसर्च। ठीक है, तो लेट्स मूव। तो कुछ अगर आप लॉग इन करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, बट इसके 2 फीचर मुझे बहुत अच्छे लगे, जो डायरेक्ट उस पर आते हैं। प्रोडक्ट में जाइए, यहाँ एक ब्राउजर एक्सटेंशन है और एक पैच हम लोग यूज नहीं करेंगे, ब्राउजर एक्सटेंशन है एंड जोटेरो प्लगइन है। अगेन जोटेरो यहाँ भी आ रहा है, दैट मेक्स द रिलेवेंट ऑफ जोटेरो, कितना रिलेवेंट है ये जोटेरो। ठीक है, क्योंकि हर चीज में हम प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो क्या ये प्लगइन ऐड करता है वो मैं शो करता हूँ। ठीक है, तो पहले आते हैं ब्राउजर एक्सटेंशन पे, जस्ट क्लिक ऑन ब्राउजर एक्सटेंशन। तो ये एक, जैसे हमने यहाँ जोटेरो एक्सटेंशन किया था उसी तरीके से एक क्रोम का एक्सटेंशन भी आता है, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अदरवाइज आप गूगल में जाएंगे, डायरेक्ट करेंगे साइट एआई ब्राउजर एक्सटेंशन, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे एडेड इस टाइप से कुछ आएगा, एस अंडरस्कोर करके। ठीक है, अब ये करता क्या है, लेट मी शो यू। तो हम चलते हैं फिर से अपने गूगल स्कॉलर की तरफ। रिसर्च में क्या होता है, कई चीजें, खासकर डिस्कशन लिखने टाइम में हमें क्या दिखाना होता है कि विच पेपर्स आर सपोर्टिंग माय आर्गुमेंट एंड विच पेपर आर अगेंस्ट माय आर्गुमेंट, अगेंस्ट माय फाइंडिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है ना फाइंड आउट करने के लिए। तो साइट क्या करता है, साइट एआई इस चीज के हमें बता देता है ऑलरेडी कि इसके पॉजिटिव, इसके आपके डायरेक्शन में कितने आर्गुमेंट इसमें बन रखे हैं, कितने लोगों ने इसे माना है कि सपोर्ट कर रहा है हमारे फाइंडिंग को, कितने लोगों ने माना है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारे आर्गुमेंट को। तो अगर हम आते हैं पेपर पे, कुछ कुछ टॉपिक बताइए आपको, आपके एरिया से, इंटरेस्ट एरिया से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट किया, हमने ये टाइटल डाला, इतने पेपर्स है, तो कुछ पेपर्स, आप ये पेपर्स देख रहे हो, नीचे एक टैब की तरह आ रहा है, ये आपको विजिबल है, आर यू एबल टू सी दिस टैब? यस। तो ये क्या करता है, ये टैब कहाँ से आ रहा है, ये साइट एआई से ही आ रहा है। ठीक है, ये इनबिल्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने ये एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया अपने क्रोम। तो ये बता रहा है, कुछ नंबर बता रहे हैं, लाइक 538 टू 130 163 समथिंग। तो हमें इससे आइडिया नहीं पता चल रहा है क्या, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्या करेगा, ये यही पेज सेम हमारे site.ai पे खोलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इससे हमें पता चलेगा एक्चुअली
जो हमारा एक प्रॉब्लम था कि कितने इसके पॉजिटिव है, कितने व्यूज नेगेटिव है इसके फाइंडिंग्स के, तो इट्स क्रिएटिंग ए रिपोर्ट। ठीक है, तो पहले हमें पता चलता, अब जैसे इस पे हम होवर करेंगे ना, तो ये देखो ये 4 टैब सेम सेम टैब जो वहाँ ओपन ऑप्शन थे तो यहीं आ रहा है, तो जस्ट इस पे होवर करोगे तो मिलेगा नंबर ऑफ पब्लिकेशन साइटिंग दिस वर्क। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये बॉक्स शो करता है, जो टिक है ग्रीन टिक, ये कहता है नंबर ऑफ सपोर्टिंग साइटेशन स्टेटमेंट अबाउट दिस, सपोर्टिंग साइटेशन, करेक्ट। तो इतने पेपर है जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, 7 है नंबर ऑफ मेंशनिंग साइटेशन स्टेटमेंट अबाउट दिस वर्क। तो 7 जो है आर्टिकल्स इसको मेंशन कर रहे हैं सिर्फ, ना सपोर्ट ना निगेट। 4th है नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग साइटेशन स्टेटमेंट अबाउट दिस वर्क। ओके, तो ये 2 चीजें हैं हमारे लिए, 2 चीजें रिलेवेंट होती है, एक तो ये सपोर्टिंग और ये कॉन्ट्रास्टिंग। तो कई बार हम लिटरेचर में देखते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग आर्गुमेंट बनाने के लिए बहुत सारा हमारा टाइम जाता है, स्पेशली वाइल राइटिंग डिस्कशन। तो ये क्या करता है, हमें एक प्रोफाइल प्रोवाइड करता है कि हमारे साइटेशन कितने निगेटिव वो कर रहे हैं, कि लाइक अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग इमेज कुछ डालना चाह रहे हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज, एक काम इसका ये है, ठीक है, साइट एआई करती है। दूसरी चीज, अगर हम सेम चीज को, अगर हम लाइक ये जर्नल है हमारा, ठीक, तो एक बगल में आप यहाँ ये देख रहे हो, जैसे ही हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो आपके किसी भी, अगर आप आर्टिकल ओपन कर रहे हो कोई भी पेज, तो सेम चीजें यहाँ ओपन होती है और इट विल शो द सेम थिंग, लाइक इतने साइटेशन, इतने पॉजिटिव है, इतने एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके, इतने निगेट कर रहे हैं और ये मेंशन कर रहे हैं। तो हर आर्टिकल के लिए आपको कुछ ऐसा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है, थंबनेल मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है, जिससे आपका साइटेशन बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, एक काम ये है इसका जो विच आई लाइक। सेकेंड प्रोडक्ट इनका है जोटेरो प्लगइन। अगेन क्या करते हैं ये जो चीज हमने 4 चीजें बताई, ऐसा जोटेरो में आप प्रोफाइल देखोगे इनका, तो ये थोड़ा डाउनलोड करना होगा आपको जोटेरो में प्लगइन। तो सिमिलर वे में जैसे हम यहाँ देख रहे थे, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड हाउ मेनी articles are disputing this article and how many are just mentioning this article। तो Zotero में, विद इन Zotero ही ये हमारा बना के आ जाता है, तो हमें बार बार इनके insight.ai पे वेब पेज पे ओपन करके ये नहीं देखना। तो इट्स अनदर बिग थिंग while writing discussion। okay, those who have written discussion, so they may find it very handy too। ठीक है, ये 2 important tools है। और yes, we have 2 minute time। तो एक असिस्टेंट टूल्स है which is useful but I don't recommend it, क्योंकि ये क्या करता है, let me show you। So as it says, ask questions and receive evidence that answers and real research। तो हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। बट ये चैट जीपीटी की तरह हेलुसिनेशन कम होता है, बट गिव्स मोर आर्टिकल्स विच इज रेफरेंस्ड। ठीक है, रेफरेंस बेस्ड आंसर देता है। तो जस्ट गिव मी अ क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क। कोई क्वेश्चन बताइए जो मैं इससे पूछ सकता हूँ अभी अपने टॉपिक के रिलेवेंट, in the form of questions, not keywords, which we are doing in our PubMed or Scopus, Google Scholar। I want a question from you guys, a research question। Integration of AI in teacher education helps in efficient learning for students। How does integration of AI helps in learning of teaching and learning to teach? Helps in learning of teachers, learning of teachers। So I've written this question and there is some setting also, so it will ask me to use some calibration। So I will use let assistant decide or always use references, specify evidence sources, so both table mode, I don't want year, from which year you want to get referenced on, so let it be blank। The most important thing is here, so model, it will use ChatGPT or Mini, but it also provide ChatGPT 5 and Cloud 3.5। so I will give it ChatGPT Nano
for trial, and it will ask me for how much reasoning effort you want. So I want it high reasoning efforts. Okay, that's only after that it will use its high reasoning using ChatGPT, and response length keeping medium, and how many publications I want it to consult before throwing up an answer. I can move it to 50 or 55, and keeping all the things blank or by default, just click on go. So what it will do, it will write a paragraph or a page and gives us a citation. So most of you or someone uses it for publication purpose. So I won't recommend that. It's not ethical to use like whole research from written by like artificial intelligence. So better to use it as a literature review kind of thing to set up your to conceptualize your research, but not for writing whole thesis or article. Okay. So since I have given him to use like high reasoning, so it is taking time. So we will wait for a minute till it gives some result. And if you can see here on the right hand side, it is saying like how it has made these searches. So first it searched for AI powered professional development for teachers, AI, these keywords, these statements it has used to find those articles relevant. Now I have given him like 50 articles. So like here is top 48 articles it has consulted to write this research. Okay. And it has also cited. You can see it has made proper citation, in-text citation, and as well as the reference list also. So isn't it cool? Time efficient, but not recommended. It will help you to get so you can see that it is writing around like 1,000 words, over 1,000 words, starting from introduction to policy implication and practical recommendation also. Okay. So if you go through this passage, you will also find that it's very scientifically written. But yes, don't use it for your full publication, but for mind, for your mental map only. Okay. So I don't think we have much time here. Pankaj, are you there? Yeah, I'm very much here. If anyone has doubt, Yes. they can unmute themselves and clarify that doubt. Any one of you. Yes. So before question round, let me say again, like you will get a link to access this site.ai along with a promo code on which you can get a trial of 1 month, I guess. Or Yeah, for 1 month. Great. So now I'm closing my screen sharing. You can ask any question relevant to today's session. Okay, go on. How was it? I mean, we also want to hear your feedback. If you have any doubt, you can clarify that. And also on our part, if you have any recommendation and any suggestion, go ahead, please unmute yourself and speak. So someone has asked like if they get certification. Okay, so okay, yes, so Hello, good evening, sir. Yes. Sumit this side from the Mumbai. First of all, thank you so much for your wonderful session. And like this session, so if there are any upcoming sessions, so can we get like update from same email ID or? Yeah, definitely. If anything comes up, we will share on our social media page, and we will also try to send emails. We have email ID of all registered participants. We will try to send on that also if something come across. Good evening, sir. You said at the start that this is a 2 days program. So No. no, it's just today's session, correct?
Yes, it's a 1 day, 2 hours. Yes, sir, you said that. You said that it is a 2 day session. 2 days. No. It's a 1 day session. I think we Okay. advertise it's for 1 day, 2 hour session. Maybe from our side, maybe some slip of tongue or something, but it's a 1 day session for 2 hours. I think it was Okay. enough. Reference management, of whatever was there, it has been beautifully covered by Mr. Amit. I guess it's depend upon the practice. More you practice, more you get it right. And Definitely. the basic idea is that how you assert those citation in your text, in your research, that has been covered. And once you start practicing for whether Zotero or EndNote or Mendeley, you will get it properly done, sir. And if you have any query, you can also write us back. We will try to respond. It's not that we are ending this relationship here itself. If you have any query regarding this, you people have our email ID. You can contact us. We will try to respond it in any manner. We are here to help. It's a If anything you have any problem you face regarding research, sir, we are here to help. You can always write us to research wise. We will respond. I want to thank to Amit sir and the Research Wise for organizing such kind of wonderful workshops, and it was a nice session and I was able to learn referencing. I would urge Research Wise to conduct such more sessions and could include the scholars from IIPS, because they are very efficient in doing hands-on with NFHS, LASI, and these kind of micro data. So I would suggest, even if it's a paid one, I think there are many scholars who are looking to get such hands-on sessions using Stata or Python or whatever, because IIPS scholars have a hold on these micro level or unit level data sets. Thank you. That was my suggestion. Thank you very much, Smriti, if I may. Yeah, Smriti. Thank you Yes. very much. Yeah, definitely. We had already conducted a workshop on our SPSS Advanced Excel. We usually will do this. We will also repeat again next month or coming month. We will come up with some more workshop. And definitely thank you for this compliment that we people at IAPS really have that expertise because of our atmosphere in the campus, and the way we have been taught, and our syllabus have accommodated all these data oriented research tools where we learn. Thank you so much for that compliment, and definitely we will come up with some more workshop where we can contribute. Actually, the idea of research wise is to impart as much as free education, and even sometimes paid, because sometimes when we get a resource person from outside, we have to pay them also some honorarium or something. So we will definitely arrange more workshop on coming days related to research, not just reference management tool. We have different statistical tool which can be taught to the social science student, those who are not very familiar to these technical tools, in a very layman language. We will try to. That's why we keep always language medium by language, Hindi and English, and we try to teach very at very foundational level to go to advanced. So we are not using very advanced level in our workshop. We try to teach in very layman language so that everybody can understand, those even if don't have statistical background. So Smriti, thank you so much. And do connect yourself to our social media platform. Basically LinkedIn, you can follow us there. We will post if anything come across. We will advertise there. You can get that information from there. And also we have email ID of all participant. We will try to send notification if some across is scheduled in coming week or month. Thank you so much. Sure. Thank you, sir. Excuse me, sir. What about research scholars who had not registered? Not registered means for this workshop, or Yes. so if those who have not registered, we don't have their email ID, right? So it means do follow our research wise page on LinkedIn. LinkedIn is a
is a social media platform where you can get information related to not just research wise, but there are various platforms. They organize workshop and send job notifications and research opportunity, conference opportunity, workshop opportunity. You will get from there. And do follow our page. It's a bit little selfish from our side, but do follow our page. You will get all information over there. Okay, This sir. is the only medium. This is the only medium where we can communicate and connect to each other. Okay. So this particular session will be uploaded on YouTube, correct? Yeah, we will send, if you have joined a WhatsApp group, we created a WhatsApp group for this workshop. Have you joined that? No, sir. Okay, sure. We will try to send email to everybody, those who have registered. And if you don't have registered, you can share your email ID. You can write us on email. So we will share the link of this recorded video. Definitely in the group, we are going to share in the WhatsApp group, and also those who have registered and attended the workshop, we will send them via email. And suppose if we missed anybody, you can always reach out us, and we will happy to share the link and any information you need on this workshop. Thank you so much. Anything else? Sir, good evening, everyone. Hi, I just Simran. want to say that till I'm in a confusion that people are telling us to use AI, but when we go to our ethical committee, they just stop us from. No. They just There is two things. I think I would yeah. like So also I just want to know Amit to what add are in the this. limits. Okay, so let Yeah. me clarify few points, and I request Mr. Amit also to add if he has. So okay, so AI, when you are asking AI to give any ideas, if you are not going with ideas to AI, you are asking AI to give you ideas, give you data, give you whole research plan. That is unethical, completely unethical, not allowed at all. But when it's come to the reference management, what Mr. Amit has taught today, he has told us not to take help of AI to getting ideas. AI is just helping you to easy the task you are doing. So suppose if AI is not there, these reference management tool is not there, you will do these referencing in the word by manually, one by one. It will take time. It's a very painstaking also, and you cannot, the way that networking and all Amit showed, you cannot analyze that which research paper is more relevant or more have been quoted by many researchers. So these things AI is just helping you to understand. AI is not giving any new idea or making your research unethical. It's just helping you to cut down that time. That time if you do the manual work. Are you getting my point? This is I think what Amit has explained today. Yes, sir. We are not propagating that you write in chat GPT कि ठीक है मेरे लिए एक paper बना दो, abstract बना दो. No, we are not recommending that. We are just recommending that manual task, which is a little time taking, little worrisome, you can take help of AI to get it done within a fraction of second. But when it's come to the moving with the new ideas, doing a research, writing a paper, writing a book chapter, write anything related to even thesis writing, dissertation writing, that idea should be your own, researched by your own, literature review done by your own, not taking help from AI. You can just take help of AI to to manage that, to cut that time short and just speed up the work. Okay. Amit, if you would like to add something in that. जी, मेरा भी वही मानना है कि जैसे कि मैंने बताया ना कि लाइक एक होता है एज ए टूल्स, एआई को एज ए टूल यूज कर सकते हैं, एआई को एज ए जनरेशन ऑफ आइडियाज नहीं यूज करने का। क्या होता है ना कि अभी क्या हो रही है ना कि जैसे हम आइडियाज जनरेट कर रहे हैं और फिर हम उसे प्रोड्यूस में भी पूरा एआई यूज कर ले रहे हैं, बट क्या होता है ना कि वो फिर आगे जाके इशू क्रिएट करता है, कई चीजें उसमें जो क्योंकि डेटाबेस बहुत वो है, लाइक हम उसे किसी, एक तो ये है कि एआई में हम कितना डेटा इनपुट कर रहे हैं, डेटा कितना विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज ये बेटर होगा कि लाइक हम थॉट प्रोसेस अपना डालें और एआई से हम हेल्प ले टू एग्जीक्यूट आवर थॉट प्रोसेस कि हम क्या चाह रहे थे, ठीक है।
राइटअप की जहां तक बात आई, जैसे कि मैंने पहले 2 टूल्स बताए, उसमें आप क्या कर रहे थे, एज अ एआई को हेल्प ले रहे थे। जो मैंने जहां एज अ असिस्टेंट बताया, उसमें मैंने बोला कि लाइक दैट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सारी चीजों को जनरेट कर दे रहा है। ठीक है, ऑलरेडी रेफरेंसेस, वो आपका मतलब लाइक विद इन लाइक आवर, आप 1 घंटे बैठोगे तो आपका एक पूरा रिसर्च पेपर तैयार हो जाएगा, और इट विल that we should not do. बी एआई जनरेटेड। ठीक है, Mhm. तो उसे हमें अवॉइड करना है। अदरवाइज आपको अगर वो करना है, लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, तो आप यूज कर सकते हो उसे, नो डाउट। Yeah, definitely. आजकल तो जर्नल्स भी करने लगे हैं कि इफ यू हैव enhanced your language, though you have written on your own, but if you have enhanced your English writing for or make it more scientific written, तो आपको क्या देना होता है, जर्नल को एट a time of submission you have to disclose it that I have made use of AI, but for language enhancing only. So For they accept this paraphrasing and kind all. of Yeah. thing. Yes. So they accept that kind of thing also. But if I say कि like मैंने सारा raw data चैट जीपीटी को दे दिया है और उसने मुझे पेपर बना के दे दिया है, तो that's not recommended for any researcher and that's not ethical. ठीक है, तो यही Not है। ethical, and in the era of AI, in the era of fast changing technology, if suppose today you are producing a paper written by AI, it's not your own idea, maybe in future you will be get caught, and फिर आपको शर्मिंदगी झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि you come up with your own idea, you come up with your data set. You can use, as Amit said, that you can use AI for brainstorming to give a different dimension to your idea, but your idea should be your original, and the research analysis done by yourself. This is what I believe. Yes, sir. Thank you, sir. Now we can close if anybody have something to ask. सर्टिफिकेशन के कई क्वेश्चन आ रहे हैं चैट बॉक्स में, तो देखेंगे तो people Sir, are the asking about coupon code that you were talking about regarding this site. Pardon, please. Sir, you were talking about the coupon code for site. Yeah. Oh, okay. So that we have collaborated with them, and we got lucky that they have provided 1 month with that code, 1 month free access to us. So that code will be shared up to everyone, those who have registered. Even if not attended the session, we will share to everybody, because maximum most of them I saw they were on YouTube streaming. We will share that code to everybody to take help of that code and get 1 month access, free access, and try to understand that platform also. Or suppose if that platform you find it interesting, you can then pay and you can use that facility. Otherwise, 1 month is enough to understand that platform. Is it what you were asking, Smriti? Yes, sir. Sir, you will share it over our Gmail IDs. Yeah. The same manner we have contacted you for this workshop. In that same manner, we will be sending you an email by thanking you for joining this session, and along with that, we will share that code. Okay, Is it thank fine? you, sir. Yeah. Okay, I think Yeah, certificate. Okay, Pankaj actually, ji, certificate. yeah. So certificate, actually we didn't thought of that prior. So let me discuss with my team also, because I cannot take decision right now. We have to discuss with our team, our advisory team, because some of workshop, when it's paid workshop, we will provide recording, certificate, everything. But this workshop we thought let's do freely for those who want to learn basic, because reference management is something very necessity, very basic things people do not understand, do not know. So we thought let's keep it free. So that's why we in our meeting we didn't decided that we will distribute the certificate. So let me connect with my team, and if they all agree, then we will try to give certificate. This is what currently I can say. Is it right now? I'm not currently in position to take that decision right now, but of course via mail we will convey our decision. When we will send the code, we will convey our decision. Is it fine, Amit? Yes, nothing from my side. Thank you all for joining this session. So thank you so much, Amit. Thank you so much for giving time and explaining wonderfully.
I mean, you were so good. In very basic, you addressed every question asked by participant. Thank you so much, Amit, and thank you everyone for participating. And pleasure is ours that we got so much overwhelming response. Thank you so much, and we are closing this meeting now. Thank you.